Just one more minute and we will be ready to start. So page is ready. Okay, we are ready to start. And okay, I have to share the link in the description as well. Resources. Okay, comment में मिल जाएगा. Guys, मैंने इस PDF की लिंक को Discord पे शेयर कर दिया है. You can go check it out there as well as I'm also sharing it in the comment section. Hey, Yuval, what is up, buddy? आज मैं बहुत लेट हो गया ना. Hmm, where is the comment section? Okay, let me print it. Link to the PDF containing all the MCQs previously and currently being asked in Capgemini on campus technical assessment, right? Is it long? Is it procedure? And if you guys want to get the pseudocode problems as well, bring on. I will share them after solving these MCQ problems. Yes, I have. Okay, let's get it. Now you have the access to the file as well. And today I will also tell, I also want to share you about the Perplexity browser. Have you guys used this browser, Comet, already? How many of you have started using this browser already? It is really amazing. It has access to all the premium models of ChatGPT, Gemini, and Grok 4 as well. And you can also get a subscription of it for 2 years. Okay, कल का assessment दे दो उसके बाद में I will share you the referral for the Perplexity. If you don't have Airtel SIM, you can still get 2 years of public Perplexity subscription just for free. And I will help you to get those 24 months of subscription for Perplexity. And let's get started. Today, I am already late, but we will quickly learn about these MCQs. And pseudocodes, I will share you after 11 p.m. Okay. 11 बजे मैं शेयर कर दूंगा. आधे घंटे में ये सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं.
मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है वैसे। एक प्रॉब्लम है कि इसमें आंसर्स ऑलरेडी गिवन है, तो ये प्रॉब्लम भी है सॉल्यूशन भी है, बट इट्स ओके। मैं सोच रहा था कि ये परप्लेक्सिटी को दूंगा पूरी पीडीएफ, उसके बाद में उससे बोलूंगा कि take my test, but let's quickly just summarize all the problems in the MCQ. So, which sorting algorithm uses the concept of divide and conquer? Anyone will want to answer this question in the comment section? Can answer it. लेकिन आंसर गिवन है यार। अच्छा ठीक है, मैं हाइड करते जाता हूँ। जल्दी जल्दी करवा दे भाई। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं सारी फाइल्स ना शेयर कर देता हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर पे। यू कैन एक्सेस देम देयर। जो भी कुछ है मेरे पास मैं सब शेयर कर देता हूँ। एंड I will not do anything in hurry. This is what I can। अच्छा ठीक है। इस फाइल में अराउंड 225 प्रॉब्लम एमसीक्यूज हैं। अच्छा ठीक है, लेट्स रीड them quickly. Which sorting algorithm uses the concept of divide and conquer? I know it already. Let's take help from perplexity. Ask the following questions one by one without going the answers to them as a rapid fire round. So let's go। मैंने शेयर की ना लिंक ब्रो, रॉबिन वर्क्स। आई हैव शेयर्ड द लिंक टू द पीडीएफ। अच्छा पीडीएफ मेरे पास है नहीं एक्चुअली। आई हैव द document file, you can print it। share the pdf। Let me do that। Okay, I'm sharing all the resources in the discord server in pdf without any problem। Okay, I just have to upload it, right? Open the Discord and go to the resources channel on our server, and I'm posting the resources there। So have you joined the server? I will share it after covering these questions only. You guys won't even study, not the question. Get back to the screen। I will share it only after 11:30. Okay, after 1 hour. Until then, let's revise the MCQs. If you
Guys are already comfortable with MCQs. Then we can wait for the what's the problem? Thank you so much, Sahil. I was saying this is the fact. Actually, this year the difficulty has increased and we can't do anything about it. Only prepare for it, be prepared for it. So let's get started. And which sorting algorithm uses concept of divide and conquer? We all know that is mud sort. Oh shit, mud sort. Yeah, ये तो बहुत टाइम लगा ऐसे. Hmm, where is the assistant? Let's read this question. Out. Ask these questions one by one in the question. Give me quickly that your first find now. So let's do a quick fire round. So what is the answer? Answer is A. Option A. That is mud shot. It will take. Okay, it is correct. Let's move to the next question. Which traversal algorithm uses a queue in a graph? What is the answer? Do you guys know it? I think the answer is depth. Sorry, breadth first search because it will store all the elements at the current node in a queue. I think it's B. Let's see what it is. That is correct. Let's move to the next question. Which of the following is a characteristics of primary key in database? Guys, if you want the PDF or the document file which contains all the question, the link is in the live chat. I have pinned it. You can access it there. And if you want to learn together with me, you can follow along. I have provided all the question to the assistant, my assistant Perplexity, and he's asking me questions and I'm answering honestly without looking into it. So let's go ahead. This is the question number 3. Which of the following is a characteristics of primary key in a database? So
uniquely identifies each record. I know it. And allows duplicate value. This is not the correct answer. Primary keys does not allow duplicate values, can have null values, cannot have null values, uniquely identify each record. So the answer should be C. So we will not be wasting any more time. Let's quickly move forward. Okay, that's correct. What is the default port number for HTTP? 8080. CP. Okay, close but not quite. The default HTTP port is 80, while 8080 is a common alternative for proxies dev servers. So the correct answer is 80. Yeah. Sahil Sakpal is saying also the IT fundamental questions were like scenario based. Okay, if मतलब I am not saying कि it is good के difficulty बढ़ा दी है, but वैसे भी कॉलेज के लैब्स में होने वाला है टेस्ट तो आई डोंट थिंक दे शुड हैव डन दैट but it is completely fine. We can't do anything about it. Okay, the next question is which of the following is not a type of cloud computing service model? Cloud computing service model. देखो, I have heard of SaaS. SaaS is software as a service. PaaS, I don't know, but I would मैं तुक्का लगाऊंगा डी पे. What should be the answer? Not quite. DaaS is the one that's not a standard cloud service model. SaaS, PaaS, and IaaS are. Okay, so I need to remember it. DAS, DaaS is not a standard cloud service. In networking, which layer is responsible for end-to-end communication? यार अगर मेरे को ये भी गलत पता होगा तो I should be a same. Which layer is responsible for end-to-end communication? Data link layer. End-to-end communication is handled by transport layer. अंशुमन. ओके. भाई मैंने जस्ट अभी बीसीए कंप्लीट किया है. मैं एसएससी की प्रिपेयर कर रहा था. साथ में से कोडिंग आती है पर इतनी नहीं. क्या मैं कुछ टाइम पर देख लेती हूँ इसलिए ना करके अपनी स्किल्स पे फोकस करें सही रहेगा. Bro, I'm not in a situation to answer this question. You can reach out to me a day after tomorrow. Then I अंशुमन रघुवंशी सिंह मैं भी तुक्का मार रहा आपकी तरह. बट आई एम रीडिंग द आंसर आफ्टर दैट एज वेल सो कुछ तो याद रहेगा कल. Which data structure is used to implement DFS in a graph queue? अभी पढ़ा था ना अपन ने. DFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यू का यूज करते. अरे बी बी होगा ना यार. सॉरी. देख मेरे को आंसर पता था लेकिन मैंने गलती से ए लिख दिया. बी है इसका आंसर राइट. हाँ. DFS uses a queue. ओके. एक चलता है. What is the big O complexity of inserting an element in binary search tree? बाइनरी सर्च ट्री तो मैंने अभी पढ़ा नहीं. लिंक लिंक लिस्ट नहीं था आंसर. Q was the answer. Okay, I think B is the answer because I have not studied binary search tree yet. I'm so honest. What happened? Pro. Okay, correct. Okay, which SQL command is used to delete a table? Drop.
फर्स्ट ऑप्शन कहाँ गया? ये हेलुसिनेट करने लगा यार। These AI models are stupid. ये क्यों लिखा मैंने? ये तो था ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा डिलीट था। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? नॉट क्वाइट ड्रॉप इज द करेक्ट अमाउंट, ये मुझे पता होते हुए भी मैंने गलत कर दिया। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो मैं लिख गलत दिया, पता सही था। इन क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल वो मैनेजेस द अंडरलाइंग हार्डवेयर इन लास्ट सेटअप। मुझे यही नहीं पता, एल ओ ए एस है या एस आई ए एस है? ओके लेट्स लर्न अबाउट इट। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, लास्ट पास licensing as a service. Okay, last is licensing as a service and platform as a service and software as a service. Okay, ठीक है. So licensing is done by the service provider. No, infrastructure provider. ठीक है. Manages software licensing through web-based configuration, traditional software, model backlog, vendors, trading control terms of use of their software, main benefits. Um, system integrator. Okay, service provider ही मैनेज करेगा हार्डवेयर को, आई थिंक. ओके, दिस इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन डीएफएस? ये तो अभी आया था ना, ये रिपीट क्यों हो गया? ओके, इसका आंसर मैंने गलत दिया था शायद इसके लिए. इज द करेक्ट आंसर क्यू. क्यू इज यूज्ड इन डीएफएस ऑफ अ ग्राफ. ओके. ओ यार, मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ यार, डीएफएस क्यों होगा? मेरा दिमाग काम, ऐसे करूंगा मैं. जेमिनी क्रैक. DFS uses a stack. Okay. अच्छा ठीक है. Let's be calm. Which of the following is not a valid SQL constraint? Index is the correct answer. This time I will not mash up and will write index. Okay. Correct, AJ. This time we both did not guessed it. We knew it. So what is the height of a full binary tree with 15 nodes? 15 nodes वाले binary tree की height कितनी होगी? So 15 का फर्स्ट नोड डिवाइडेड बाय 2, 14, 7 एंड 7, 3 and 3, 1 2 3. हाँ, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया यार. आंसर तो 3 होना था. इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है. अब ये मत बोलना कि गलत है. 3 होगा ना आंसर. करेक्ट. It had only one option. In cloud computing, which term describes the ability to increase or decrease resources on demand? वर्चुअलाइजेशन नहीं होगा, मल्टीनेंसी नहीं होगा, इलास्टिसिटी भी नहीं होगा, स्केलेबिलिटी होगा. So that is C. C is the correct answer. Hardik Jain is saying 7. अरे, elasticity. On demand up down adjustment is called elasticity. मैं physics वाला elasticity समझ रहा था. Scalability is about handling growth often planned. Okay. Scalability is about handling growth often planned. Okay. What does the TCP protocol ensure in data transmission? Transfer control protocol, best effort delivery, reliable delivery,
Mm, reliable delivery. I'm still confused. Correct. Okay. Mm, which of the following algorithm is used for deadlock detection in OS? मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम. तुम्हें पता है क्या? Any one of you know the answer to this question? फ्लॉयड वाटसन या बेलमन फोर्ड? बैंकर्स एल्गोरिदम. ओ सॉरी, बैंकर्स एल्गोरिदम मुझे याद आ गया. हम्म. क्या तुक्का है? तुक्का तो नहीं है, याद आ गया था. बैंकर्स एल्गोरिदम. ओके. Bankers is primarily for avoidance. Many curriculars still cite in detection context. Okay, in B3 of order 4, what is the maximum number of keys that a node can hold? B3 binary search tree तो वैसा होता है ना. In a B3 of order 4, what is the maximum number of keys that a node can hold? Order 4. यार पढ़ा तो था यार सेमेस्टर के टाइम. 4 nodes, like maximum 4 keys हो सकती है ना. नहीं, कीज क्यों होंगी? कीज तो एक ही होगी. 4. Let's say 4. 4 is the correct answer. AJ is saying 3. Let's see what is correct. Close. Maximum number of keys is 3. AJ was right. I am wrong. Hmm. Which protocol is used for secure communication over the internet? HTTPS. ये तो मुझे अच्छे से पता है. I can brag about it. Okay. Let's move to the next question. What is the minimum number of edges in a connected graph with 6 vertices? Maximum number of edges. 6 vertices. 5 edge only. 6 vertices. 1, 2, 3, 4. So it will have 3. I think it is 5. चलिए ड्रॉ पेपर तो ड्रॉ करके देखूं क्या मैं. 1, 2, 3, 4, 5. हाँ ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस पूछा है ना, तो मिनिमम तो 5 होंगी ही. ओके हाँ ठीक है, मिनिमम में तो बिना सोचे 5 करना. ओके. करेक्ट आंसर. n-1 एजेस. ये याद रखना फॉर्मूला, कल क्वेश्चन आता है तो. इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल? ऑलरेडी आंसर ये है. इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आया लेकिन बाकी? एजे सिंह नहीं, 6 ही है. वो 6 वर्टाइसेस हैं, 6 पॉइंट्स हैं, तो उसमें एजेस 6 कैसे हो सकती हैं? लेट मी शो यू. छोड़ो. Imagine 6 people are standing, and if they join hands, there will be only 5 lines in the circle. Which hashing technique resolves collision using chaining? ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी. किसी को पता है? किसी ने पढ़ा है ये पहले? Hashing technique resolves collision. Hashing technique. Hashing technique resolves collision using chaining. तो सेपरेट चेनिंग ही होगा. चेनिंग का यूज करती है तो ये तो कॉमन सेंस हो गया. और अगर ये गलत हुआ तो मेरा कॉमन सेंस कॉमन नहीं है. करेक्ट है. चलो ठीक है, कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं कुछ कुछ. ओके. विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज नॉन प्रिमिटिव? यार ये पढ़ा तो बहुत है यार एकेडमिक्स में, लेकिन रिवाइज कभी किया ही नहीं. आई थिंक राउंड रॉबिन इज द आंसर. कोई करेक्ट करेगा मेरे को अगर मैं गलत हूं तो. विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज नॉन प्रिमिटिव? ऑपरेटिंग सिस्टम किसका स्ट्रांग है? SJF. Hardik is saying SJF. Where is my YouTube guys?
without ads. People are subscribing. Guys, one more thing. I took a challenge to solve driver sheet in 45 days, that to live, and I stream live daily. So after the assessment, you guys can also follow me for that. I'm working hard on that. What I was saying. ओके which अच्छा ठीक है हमारा I think I should open live chat here so you guys can also see the live chat इतना तो कर ही सकते हैं लाइव चैट कहाँ मिलेगा दो टाइम कल से मैं भी आता हूँ मैं रेगुलरली शाम को स्ट्रीम करता हूँ चैनल पे तुम्हें उसका कॉन्टेक्स्ट मिल ही जाएगा about my challenge that I'm doing. Okay, is the live chat visible now? Guys, it's been more than 30 days. बाकी लास्ट 3 डेज से मेरी तबीयत खराब थी उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था ओके लेट्स गेट बैक टू द प्रॉब्लम सो the answer is SJF, right? You are right. Shortest job first is a non-preemptive algorithm. AJ, you are a machine. Okay, next question is what is the maximum number of subnets that can be created with a subnet mask of 28 IPv4? इसका भी करेक्ट आंसर मुझे पता नहीं है आई विल गो विथ 14 किसी को पता है क्या इसका आंसर 16 या 32 होगा आई थिंक 14 लेट्स सी who's correct Hardik or me not quite with you get 16 possible subnets 2 to the power 4 is equals to 16 okay so Hardik is right. 16 possible subnets. I need to revise computer networks as well. What is the advantages of using ACID properties in database? Data consistency. C is mm, atomicity, consistency. Consistency is the right answer, right? Okay, okay, that was right. In which scenario does a binary tree become a skewed tree? Skewed tree. When all nodes have only one child. I think that is the right answer. Skewed tree. Skewed मतलब सुखड़ा हुआ तो सुखड़ा हुआ कब होगा जब उसके पास बस एक ही बच्चा होगा correct answer what is the output of the following postfix expression ये postfix लग क्यों नहीं रहा है postfix के जैसा
प्रीफिक्स में ऑपरेटर आगे आ जाता है, पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर पीछे चला जाता है, बट यहाँ पे तो ऑपरेंड के बीच में है। व्हाट डज इट मीन? ये पोस्ट फिक्स की तरह लग क्यों नहीं रहा? अच्छा, यहाँ पे आंसर भी दिया, टू इवेल्युएट दैट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आई नीड टू कंफर्म दैट ऑपरेटर्स इट लुक्स लाइक नंबर आर रन टुगेदर विदाउट एक्सप्लिसिट आफ्टर। ओके, ये अलग अलग नंबर्स हैं आई थिंक। 7 - 3। अच्छा, ये ठीक से आया नहीं है क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ है इसमें। Skip this question, it is incomplete. Which layer in the OSI model responsible for encryption and decryption? भाई ये तो रिसेंटली पढ़ा हुआ है, तो भी गलत करूंगा तो कैसे चलेगा? Which layer in the OSI model is responsible for encryption and decryption? Presentation layer is for authentication. I think transport layer is the correct answer. Presentation layer is responsible for encryption and decryption in OSI model. I need to remember this. मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. What is the role of hypervisor in cloud computing? I have not learned anything on cloud computing yet, but I can guess it. What is the role of hypervisor? Supervisor होता है, hypervisor क्या होता है? In cloud computing, manages all database transaction, allocates hardware resources to virtual machine, ensure reliable data. Hypervisor. I also think B is the right answer. Hypervisor. Providing, okay, that is correct. हार्दिक ने क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से पढ़ रखा है। वीएम में लगता है, ओके, वर्चुअल मशीन में लगता है। Allocates hardware resources to virtual machines. Okay. Hypervisor allocates, okay, क्या था? Allocates hardware resources to virtual machines. Fine. Next question, which traversal algorithm is used to check if a binary tree is a binary search tree? Binary search tree. मैंने अभी ट्री और ग्राफ भी नहीं पढ़ा. Traversal algorithm to check binary tree if it is binary search tree. See, इसमें in a relational database which normal form eliminates transitive dependency. Okay, transitive तो पढ़ा हुआ है मैंने. ठीक है. थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है ना ट्रांजिटिव के लिए. प्राइमरी, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, किंजल आई एम यूजिंग Perplexity's new browser, Comet, which is really great browser. If you want 2 year subscription of Perplexity for free, you can join our Discord server. There I will provide the referral link using which you can get 2 years of subscription of all the premium models, ChatGPT, Gemini, Grok, and Claude Sonnet 4 as well. And I think its answer is 3. That, oh sorry, C, BCN, 3NF. Okay. और ट्रांजिटिव 3NF में होता है. इतना तो याद है मुझे.
हाँ, फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। और वन एन एफ में क्या होता है यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। ओके, रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नॉन की टू नॉन की। ओके, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। वो वन एन एफ क्या, कौन सी डिपेंडेंसी रिमूव करता है? विच डेटा स्ट्रक्चर गिव्स ओ कांस्टेंट एवरेज टाइम लुकअप? ये तीनों नहीं पढ़े मैंने। हैश टेबल। मैंने अभी हैश टेबल ही पढ़ा है। ओके, एटॉमिक डिपेंडेंसी एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव। ओके, और बी सी एन एफ तो पढ़ा ही नहीं। टू मच। ओके, आई हैव ओनली स्टडीड हैश टेबल इन दिस। किसी को पता है इसका आंसर? इट इज डिफिकल्ट यार थोड़ा, कंपेयर टू ईपैम। तुम लोगों ने ईपैम का टेस्ट दिया था कॉलेज में? ईपैम वाला इजी था। लेट्स से हैश टेबल, क्योंकि मैंने वही पढ़ा है। वो गलत हो। ओके, दैट इज राइट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिलेशनल डेटाबेस? मोंगो डीबी, ये तो अच्छे से पता है। एजे भाई इज सेइंग बहुत टाइम हो गया है, 7-8 मंथ। ब्रो, मुझे 7-8 महीने हो गए थे प्रोक्रास्टिनेट करते हुए, मैंने अभी 1 महीना हुआ है पढ़ते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर OSI लेयर 3? नेटवर्क लेयर, यूडीपी। कायरा वीएम एंड स्टेटस। हेलो सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या आप जवाब दे दोगे प्लीज? नो, you can ask the question. I will answer only if it is answerable. I think UDP is the answer, but AJ is saying TCP. वैसा ही लेयर थ्री में। Just a minute, guys. I will be back. Okay, let's go with, yeah, don't demotivate, do demotivate us. यार, हमारा भी कल कैप जेमिनाई का असेसमेंट है, हम भी। मैंने वैसे डिले तो नहीं लगाया है चैट में। रुको, फोन में खोलता हूँ। मैं कितना फंबल करता हूँ। पूरी लाइव स्ट्रीम डिले हो रही है क्या? एक बार चेक करता हूँ। अगर डिले को कम कर सकते हो। यार, नॉर्मल लेटेंसी पे स्टार्ट हुई है तो थोड़ी डिले तो है। भाई सेम ही समझो, जितने आप हो उतना मैं हूँ। एजे भाई। हाँ, यार स्ट्रीम तो थोड़ी डिलेड है यार। एक 4 से 5 सेकंड का डिले है। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
get back to the problem. Which of the following protocols operate at network layer? Hmm, okay, TCP को ही करता हूँ. Transfer Control Protocol. The correct answer is IP, which is a network layer, layer 3 protocol. Transport TCP is transport layer. ओके, ठीक है. अब याद रखना, मुझे भी याद रखना पड़ेगा. TCP is operates at transport layer, and the correct answer is C, which is IP, information protocol that operates on network layer. Network layer is number 3. यार quickly revise करना तो चाहिए. We will also find up tomorrow after seeing these difficult problems in our assessment. Which page replacement algorithm uses the longest time in future before a page is used again? Which page replacement operating system sucks? ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं क्या यार? यार चैट तो सच में बहुत ज्यादा डिलेड है यार. LRU. Let's go with it. That is not the correct answer. Optimal OPT is the algorithm that replaces the page that will not be used for the longest time in the future. Okay, which of the OPT, ऐसा कोई एल्गोरिदम होता भी है, मैंने तो पहली बार सुना है इसके बारे में. Which of the following is used for network devices? SMTP or DHCP? Device Discovery Management. DHCP, SNMP. DHCP. IP या मैक देने के काम आता है. Okay, bro. SNMP. What does it stands for? SNMP. Simple Network Management Protocol is an internet standard protocol for collecting and organizing information about managed device on IP networks and for modifying that information to change device behavior. Device behavior. Okay. Which data structure is best used for implementing recursion? Stack. ये तो पता है मुझे. Data structures is my strength. Okay, which scheduling metric measure the total time in process spends in a ready queue? Which scheduling metric measures the total time in a process spends in the ready queue? Waiting time. Okay, ये तो याद है मुझे. Waiting time. Okay, Hardik, bye. See you tomorrow. Which of the following is an example? कितने बजे है वैसे slot? Hardik, are you there? Which of the following is an example of a classless routing protocol? Classless routing protocol. Tomorrow. Tomorrow. तुमको मारो गोली. Which of the following is an example of a classless routing protocol?
मुझे उन चारों के नाम नहीं पता। ओ एस पी एफ। ओ एस पी एफ। सुबह ही है यार। तुम्हारे साथ तो और पूरा। मेरा 4 बजे है। कल शाम को मिलते हैं। ओके, OSPF supports VLSM and is classless. Great job. Status। अच्छा ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो पढ़ा ही नहीं। मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छा है, ये तो मुझे भी पता है, एसक्यूएल कमांड्स भी अच्छे हैं, बट areas to improve are OSI layer specifics, page replacement algorithm and network protocols। ओके, बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, जेमिनाई का भी एआई होगा ना जो हम यूज कर सकते हैं, गेस। एआई। अच्छा, फिर यहाँ पे एक्सेस नहीं है उसका। तो रिसर्च नहीं करनी। और तो क्या Gemini MCQ Codecules। Codecules assistant case done। Is it visible? Windows capture। मेरी शक्ल सामने आ रही है क्या? नीचे कर सकता हूँ। हटा दूँ तो मेरी शक्ल। Okay, now it is fine। Hmm, okay, let's ask Chat, sorry, Gemini to ask questions। बहुत बताना पड़ता है जेमिनाई को, तब सही से आंसर करता है। विदाउट आंसरिंग, ओके। अच्छा, ये फिर से रिवाइज करा रहा है क्या? कर लेते हैं रिवाइज। इस बार क्विकली करेंगे। पहले तो मर्ज शॉट यूजेस डिवाइड एंड कॉन्कर। दैट इज करेक्ट यार, लेकिन ये टाइम लगाएगा क्या इतना रिस्पॉन्ड करने में? ग्राफ कवर्जल में बीएफएस के लिए क्यू का यूज होता है, तो आंसर इज बी। ओके, इसको डार्क मोड पे स्विच कर रहे हैं क्या? ओके, primary key in a database, uniquely identify each record। C is the correct answer। And the next is, what is the default port number for HTTP? That is A। Which of the following is not a type of cloud computing service model? That is C, DAS। DAS is not a type of cloud computing
algorithm. In networking, which layer is responsible for end-to-end communication? End-to-end communication. Transport layer. अरे इसमें ये तो बताया ही नहीं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द करेक्ट आंसर। ये तो बताता जा भाई कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं। Also verify my answer as correct and incorrect. Okay, what is the big O complexity of inserting a element in binary search tree? That is log n. Binary search tree log n. Right, is correct. Okay. What is which SQL command is used to delete a table? Drop. ये मैंने लास्ट टाइम गलती से डिलीट कर दिया था, but it is drop I know. Okay. Hello, Vamsavardhan. Long time no see. How are you? In a cloud computing model, who manages the underlying hardware in last setup? That is the service provider. That is the service provider. Is correct. Okay. Which type of data structure is used in DFS? Queue. That is the correct answer. We have already covered it. Okay. Which of the following is not a valid SQL constraint? That is index. Option number C. Okay, what is the height of a full binary search tree with 15 nodes? That is 3 only. That is the answer. And if you guys want the PDF to the questions, it is in the pinned comment in our live chat. Okay, so don't waste your time if you are not actually interacting with the questions that I'm solving. Elasticity is the term describe the ability to increase and decrease resources on demand. Okay, elasticity. Oh, congratulations, Vamsa. All the best for your event. Okay. Tomorrow I have my assessment for Capgemini. My interview that was crazy. It was easy. LTI माइंट्री का इंटरव्यू था, बॉट ने लिया. I was scared कि बहुत difficult होगा, but it was really very easy. Roshan Shukla is saying you're from LNCT. Yes, bro, I'm from LNCT. Okay, what does TCP protocol ensure in data transmission? Transfer control protocol, reliable delivery. Kinjal Gaur, hi, I joined your Discord now. How to get the access of perplexity? Okay, I will give you right now. मैंने ये कहा था कि मैं एक दो दिन के बाद वहाँ पे रेफरल लिंक शेयर करूँगा. Let me open my perplexity. Uh, if you guys are watching, let me tell you, if you want to get 2 years of subscription of Perplexity, that too for free, I can help you. But for that, you have to join the Discord server. There, I will be like posting your referral links to my channel. Okay. Mm, where do I find that? My account. ये रहा तुम्हारा परप्लेक्सिटी का रेफरल. इसको क्लिक करके तुम अगर अपना स्टूडेंट आईडी से वेरीफाई करोगे तो यू विल गेट 1 मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन.
And after that, you have to refer to your friends to get 1 month of subscription. Every friend you refer, you will get 1 month, and I will help you. You have to like first make your account and verify yourself as a student using your college ID card, and share your referral in my Discord server. I will post your referrals in this. Yes, it will work. Just create a fake ID card using Canva. Okay. Okay, which of the following algorithm is used for deadlock detection in Banker's algorithm? Deadlock detection in OS is Banker's algorithm. Okay. Vamsa was saying, bro, I'm applying for internships, but I'm not getting reply mail also at least. But why? तरुण पवार मेरा भी 4 बजे से है मिलते हैं कॉलेज में Vamsa Vardhan is saying, bro, I'm applying for internships, but I'm not getting reply mail. Bro, I can't share you any experience because I have not applied for internships like that. I got an internship offer from Accenture, but वो भी मुझे quit करना पड़ा क्योंकि मेरे exams थे. And I have not applied to many companies for internship, so I can't tell you. Maybe your resume needs some improvement. We will talk about that later. Let me solve this question. In a B tree of order 4, what is the maximum number of keys that a node can hold? That is the 3. 3 is the correct answer for that. And which protocol is correct था ना मेरा आंसर हाँ ठीक है which protocol is used for secure communication over the internet? That is HTTPS. Very common answer. Okay, question is common. वमसा एक्सेंचर के लिए हमारे कॉलेज वाले बहुत पुश कर रहे थे कि गो फॉर गोल्ड में अपने कोर्सेज कंप्लीट करो एंड अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप एंड आफ्टर कंप्लीटिंग गो फॉर गोल्ड कोर्सेज आई टुक इट सीरियसली कि अच्छा ठीक है क्रैक करते हैं देन आई reached to the interview and I cracked the interview. After that I got the offer, but मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स होने की वजह से कॉलेज वालों ने जाने नहीं दिया, परमिशन ही नहीं दी जाने की. What is minimum number of edges in a connected graph with 6 vertices? The answer is 5. We have already discussed why. Okay. Okay, it is correct. In SQL, which command is used to modify structure of an existing table? That is alter. It is only option. Okay, so there is no other option, so we will mark it as A. Okay, Vamsa, it is a platform of Accenture where they have many courses to do. So what I used to do, मतलब उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक थी, लूप होल था जो मैंने यूज किया क्विकली कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए. बहुत लंबे लंबे बहुत सारे कोर्सेज थे जिनको कंप्लीट करना था. So it was hectic. People were avoiding, but I did not. Okay, my answer was correct. Which hashing technique resolves collision with chaining? So इसका तो आंसर एकदम obvious है. Chaining की बात हो रही है तो separate chaining is the answer. That is the only option which contains chaining. This is my logic. I am not trying to learn everything right now. Which scheduling algorithm is non-preemptive? SJF is non-preemptive sorting. Sorting nahi. Scheduling algorithm. C is the correct answer. Your answer C is correct. What is the maximum number of subnet that can be created with a subnet mask of 28 in IPv4? Hmm, इसका आंसर क्या होगा? ओके वंशावर्धन, वो सूडो कोड भेज दे भाई प्लीज. अच्छा ठीक है भेजता हूँ.
हाँ 11:30 होने वाला है वैसे भी। ठीक है, आई एम शेयरिंग इट। ओके वंशवर्धन, सी यू टुमारो। कहाँ गया? क्या? You guys have to join the Discord server for pseudocodes if you want right now, or otherwise I will be solving pseudocodes as well on the live stream. But ठीक है, pseudocodes भी share कर देता हूँ। Sorry for taking your time, but I am also working hard for this reach as well, my own studies. Okay, what is the maximum number of subnet that can be created? Sorry, now I will have my lab chat as well. Gemini है ना? ठीक है. So what is the right answer? मैं फिर से भूल गया. What is the maximum number of subnet that can be created with a subnet mask of 28 in IPv4? So the answer should be 16 as much as I can remember. अच्छा लाइव चैट तुम्हें नहीं दिख रही है क्या? लाइव चैट दिखा क्या तुम लोगों को? नहीं। स्कैन कर। Okay, now it should be visible. Okay, what is the advantage of using acid properties in database transactions? That is consistency, C4 consistency in acid. That is the only correct option. Let's go. Your answer is correct, right? Uh, your answer B is correct. Okay. In which scenario does a binary tree becomes a skew tree when it has only one child? That we have already discussed. Option number C. Let's move forward quickly. And if you guys are waiting for the like resources, you can get the resources in our Discord server or in the link pinned comment in our live chat. Okay. What is the output of following postfix expression? ये incomplete question है, but let's say 20 is the answer. Question incomplete है क्योंकि उसमें सारे operators नहीं है. Is incorrect. The correct answer is 30. Okay. Uh, कुछ कुछ लोगों का 8 बजे से तो वो सुबह जल्दी जाएंगे, लाइक 9 बजे से स्टार्ट होगा, आई गेस मेल आया होगा. मुझे मेल आया है 4 बजे का, तो मैं अराउंड जाऊंगा अराउंड 12 PM और 1 PM. तरुण पवार. Okay, which layer in the OSI model is responsible for encryption and decryption? Encryption and decryption presentation layer. Okay, the data is encrypted and decrypted in presentation layer. Option number C. Okay, what is the role of hypervisor? ये हार्दिक ने बताया था, क्या था इसका आंसर? Allocates hardware resources to the virtual machine. Allocates hardware resources to the virtual machine.
Okay, which traversal algorithm is used to check if a binary tree is binary search tree in order traversal? In order traversal, that is option number C. In order traversal. Okay, that is the correct answer. And in relational database, which normal form eliminates transitive dependency? That is 3NF. 1NF eliminates functional, नहीं, कुछ तो एक डिपेंडेंसी होती है जो 1NF रिमूव करता है, देन फंक्शनल डिपेंडेंसी को 2NF रिमूव करता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को 3NF रिमूव करता है. ओके. ओके, लेट्स रिवाइज इट एज वेल. के पास भी एआई है. Data normalization uses a series of rules called normal forms to reduce redundancy and prevent data anomalies such as insertion, update, deletion, anomalies. The most commonly used normal forms are 1NF, 2NF, 3NF, and DCNF, with higher forms addressing more complex dependencies. Stable in 1NF, if all the attributes contain atomic values, there are no repeating groups. Each column has unique name and order of rows of column does not matter. This means that a column cannot hold a list or composite structure. For example, storing multiple phone numbers in a single cell violates 1NF. ओके, एटॉमिक डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए 1NF का यूज करते हैं. 2NF में it must satisfy 1NF and partial dependency or functional dependency बोलते हैं इसको. Partial dependency, this means that every non-prime attribute, non-key attribute must depend on the entire primary key, not just a part of it. For instance, a composite key consists of student ID and course ID, then attribute like student name should not depend solely on student ID. Okay. And 3NF, it is 2NF also and has no transitive dependency. This means no non-key attribute should not depend on other non-key attributes. For example, if a column depends on another non-key column rather than the primary key, a transitive dependency exists and must be resolved. Okay, इतना काफी है. Atomic dependency, partial dependency, and transitive dependency. Okay, this much is enough. So the answer is 3NF, that is C. Third normal form, 3NF. Okay. हम्म, हाँ करूँगा. इसके बाद करूँगा, ये सारे एक बार डिस्कस करने के बाद मुझे थोड़ा मेमोराइज भी हो जाएंगे शायद. What is big O complexity of deleting minimal element in min heap? Min heap. Min heap. Okay, should be log n. Okay, that is log of n. Removing minimum element from the known heap is log of n time complexity. To, okay, which network topology has a single point of failure? Single point of failure. Mesh, first, twin, star. Three, mesh, first. Single point of failure. I know about star topology, ring topology, mesh topology, first topology, but what will be the single point of failure? Single topology. Your answer is incorrect. The correct answer is star topology. In star topology, the point single point of failure, there is single point of failure. Okay, which of the following is used to ensure atomicity in database transactions?
Indexing, I think so, is incorrect. Correct answer is C, log files. Okay, दो questions cover करते हैं. Logging files is used to ensure atomicity in database transaction. Logging files. Okay. What is the maximum height of an AVL tree with 15 nodes? AVL trees. Maximum height of an AVL tree. Maximum height पूछिए ना, तो it should be 7. That is option number D. ये है मेरा तुक्का. The correct answer is 4. What is the maximum height of an AVL tree with 15 nodes? कितना गलत. 15 nodes हैं अगर, so say the maximum height will be 4. 4 are AVL tree average. Right. Okay, which of the following algorithm is used for cycle detection in an unidirected graph? Options to any. Next question. Which type of storage is used by the log in cloud computing? The log block storage is incorrect. Cloud computing में right now दिया क्या होगा? Answer A for which types is incorrect. The correct answer is B, object storage. Okay, B, object storage is used by Blog in cloud computing. Object storage is used by Blog in cloud computing. What is the IP address range for Class B networks? I have no idea, but let's say 192, so Mahaba, because I have seen 192 so many times, is incorrect. The correct answer is 128 to 191. 254. इसको गूगल सर्च करते हैं. IP address range for Class B network spans from 128.0.0 to 191. This range is defined by the first octet having a value between 128 and 191. अच्छा ठीक है. That means Class A must represent from 0 to 128, right? 127. Class A represents from 0 to 127. Okay, first octet, right? Mm, First octet having value between, which corresponds to the binary pattern 10 in the two most significant bits of first octet. The first two octets are used for the network portion, network ID. Okay, what are the different class? IP address range for class B network is from 110. अच्छा ठीक है. And class A कहाँ है? Mm, Class A network uses the first octet for the network ID ranging from 1 to 126, and 0 and 127 are reserved, allowing for 126 networks and up to host per network.
And Class C network used the first three octet for the network ID, the first octet ranging from 192 to 223, 2 million networks and 254 hosts per network. ये तो कंफ्यूजिंग है यार बहुत. इतना याद रखो, क्लास बी is from 190, not 190, to 128 to 191. Okay, so okay. In relational database, which key is used to uniquely identify a record? That is primary key. Option number B. Let's go. And then, what is the primary advantage of using a circular queue over a normal queue? Faster MQ operation or easier sorting. Yeah, circular queue तो use नहीं किया मैंने अभी. इम्प्लीमेंटेशन सिंपल तो नहीं होगा. ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी होगा या फिर फास्टर MQ ऑपरेशन. फास्टर MQ ऑपरेशन होगा क्योंकि फ्रंट एंड रियर एक ही हो जाएगा. Your answer is incorrect. Optimized memory usage is the correct answer. Circular queue a circular queue का primary advantage है optimized memory usage. Okay, I got it, sir. Which algorithm is used in cryptography for secure key exchange? Cryptography. अंशुल तो है क्या यहाँ? ये तो मैंने तीनों नहीं पढ़े हैं क्रिप्टोग्राफी. I will guess it to be C. Diffie-Hellman. Your answer is correct. Okay, but I will now remember what it is. Algorithm used in cryptography for secure key exchange is Diffie-Hellman. Okay. In OSI model, which layer is responsible for ensuring reliable message delivery? That is transport layer. That is option number C. Okay. What is the maximum number of edges in a complete unidirected graph with 7 vertices? Maximum number of edges in a complete undirected graph. Undirected graph with 7 vertices. Maximum number of edges. And 7 6 are 42. हर vertex की 6 edges हो सकती हैं, right? So D is the answer. 7 6 are 42. It should be the right answer. Is incorrect. The correct answer is 21. But how? Maximum number of edges in a complete undirected graph. Saurabh Singh is back. Welcome, Saurabh sir. How are you? The maximum number of edges in a complete undirected graph with 7 vertices is calculated using the formula which is n into n minus 1 by 2, where n is the number of vertices. Substituting 1 is equals to 7. ठीक है, formula याद रखना है हमारे को. n into n minus 1 by 2. But why we can't have 6 edges for each vertex? Okay, ठीक है. Sorry, I got it. What is the error? मैं 42 काउंट कर रहा हूँ, लेकिन जिस वर्टाइस के साथ में एज बनेगा वो भी तो एक बार काउंट करेगा सेम एज को. एज को. एज. ओके. ओके ओके, आई गॉट माय
mistake. Which of the following is a constraint used to enforce data integrity in SQL? Integrity. Check और join. इंटीग्रिटी का मतलब ज्वाइन तो नहीं होता। आपका स्लॉट कितने बजे है सौरभ सर? मेरा आंसर करेक्ट है ना? ठीक है। Check is the constraint used for data integrity. That is, it is right or not. And your what does LRU cache replacement policy prioritize for replacement? Least recently used. इसका नाम ही यही है. So replacement policy prioritize for replacement. Okay, then see you tomorrow. टेस्ट के बाद मुझे बता देना कैसा क्या प्रॉब्लम्स आए. मैं मिलूंगा वहीं बाहर वेट करता हुआ. The most recently used page. Obvious सा आंसर है. LRU means ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे आ गया यार. अच्छा सेम क्वेश्चन तो दो बार रिपीट कर दिया इसने. So the LRU replacement policy prioritize the least recently used page. All the best, Saurabh. Mm, okay, my answer is correct. Which cloud deployment model is exclusively used by a single organization? Single organization. Private cloud. That is D. Okay, your answer is correct. Which data structure is best for implementing priority queue? Priority queue. Heap. सौरभ सर इसका आंसर क्या है? ये तो डीएसए में भी मुझसे आगे निकल गया है यार. स्टैक एंड क्यूज तो मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन उसमें प्रायोरिटी क्यों नहीं पढ़ा मैंने. आई थिंक ओके लेट्स डू द गैस वर्क. कल गैस नहीं करना पड़ेगा फिर. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. Heap is used for implementing priority queue. Heap is used for implementing priority queue. What is big or time complexity for of searching an element in balanced binary search tree? Balanced binary search tree. Binary search में log n होगी. Log n होगी. Balanced binary search tree. या फिर n होगी. N is number of elements but the height एक होता है. Log n ही होनी चाहिए. बाइनरी सर्च की भी लॉग एन होती है ना. करेक्ट. सौरभ भाई आपके आंसर्स डिले हो रहे हैं. मैं आपके आंसर देख के नहीं बोल रहा हूँ. रोशन शुक्ला इज हियर. वेलकम रोशन. योर आंसर ए इज करेक्ट. ओके. विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन टू अ सर्वर? एफ एस एस एच. रिमोट लॉगिन टू अ सर्वर. इन दोनों में से कोई एक होगा. एफ टी पी एस एस एच. एफ टी पी या एस एस एच ये मुझे नहीं पता यार. बट इतना पता है एफ टी पी या एस एस एच में से कोई एक होगा तो आई विल गेस एफ टी पी. करेक्ट आंसर वाज एस एस एच. ये एफ टी पी और एस एस एच के बारे में भी पढ़ा. एफ टी पी वर्सेस एस एस एच. फाइल ट्रांसफर. अरे ठीक है. यूज फॉर रिमोट लॉगिन कैसे. कितनी बड़ी गलती की मैंने. एफ टी पी का फुल फॉर्म ही याद कर लेता तो मैं समझ जाता. ये भी एलिमिनेट हो जाता. सिक्योर सेल. एस एस एच मीन्स सिक्योर शेल. Okay, now I got it.
Let's move to the next question. What is the main characteristics of normalization in database? That is increase query speed. Okay, I am sure, and I can be wrong as well. The correct answer is data redundancy, not did increase query speed. Okay, let's data redundancy याद रखना है. Okay. तुम दोनों को सही पता था, but I was wrong. Okay, data redundancy is the main characteristics of normalization. What is the best case time complexity of quick short? Log n या n log n? यहाँ भी गड़बड़ कर दूंगा क्या मैं? Roshan is saying D. I am saying A. A is the correct answer. N log n. Which one is better, n log n or log n? Log n is better, but it's which of the following is not a collision resolution technique in hashing? Open addressing, separate chaining, quadratic coding, linear coding. Okay. Log n is better, but sorting can't be done in log n. Thank you, Saurabh. I will remember this also. मेरे छोटे से दिमाग में याद रखूंगा. Which of the following is not a collision resolution technique in hashing? मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे तब जॉब लगेगी. मुझे तो लगा डीएसए से काम हो जाएगा. डीएसए भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है. Which of the following is not a collision resolution technique in hashing? Open addressing. अभी तो मुझे लगता है सौरभ और मैं ही बचेंगे. सौरभ भी नहीं है. मेरा आंसर इज इनकरेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? यार ये सिंपल क्वेश्चंस ही इतने डिफिकल्ट हैं तो सूडो कोड्स में क्या होगा? क्विक शॉट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालॉग है. ठीक है. इसका आंसर ही नहीं है स्निपेट में. तो सर्च कर लेते हैं ना. आई एम टायर्ड नाउ.
यार एआई आंसर नहीं करेगा क्या? यू आर अलाइव। आई एम ऑल्सो अलाइव। पहली बार किसी कंपनी के लिए मैं इतना प्रिपेयर कर रहा हूँ और वो और ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है जितना ज्यादा प्रिपेयर कर रहा हूँ। Same dashboard causing a conflict in the placement of elements, the primary duplicate with separate chain and open addressing. Open addressing is different. मेरा आंसर गलत था, इसका आंसर गलत। So what should be the answer? हम्म, सारे तो आंसर सही हैं। सारे। अच्छा ठीक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। Correct question नहीं है। In a directed graph, what is the time complexity of detecting a cycle using depth first search? So B plus C. याद होना चाहिए। But that is also incorrect. Okay, it is correct. In TCP/IP model, which protocol is used for email transmission? SMTP. मेरा जी यहाँ वहाँ है SMTP. Is correct. What is the maximum number of nodes in a binary tree with height h? Binary tree with height h. It doubles. 1, 2, 4, 8. So 1, 2, h minus 1. Sorry, 2 to the power h minus 1, right? 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 3 पे 4 होगा, 4 पे 8 होगा। हाँ ठीक है, 2 to the power h is the correct answer. So let's say D. Mm, what is the maximum? Incorrect. The correct answer is 2 to the power h plus 1 minus 1. Why? अच्छा ठीक है, आज की लाइव स्ट्रीम देखते हैं कैसे परफॉर्म की। रोशन शुक्ला इज सेइंग कि अन अकेडमी वाले ने बोला था कि सूडो कोड बहुत टफ आ रहे हैं, आसपास के कोई कॉलेज के एक्सपीरियंस पता है क्या? मैंने जितना डिस्कवर किया सभी का यही एक्सपीरियंस है कि डिफिकल्ट है सूडो कोड्स। सब्सक्राइबिंग।
कैब जेमिना इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेगी तो कैसे चलेगा? Which SQL command is used? वो तो लगने वाली है। क्या लगता है कोई पहुंच पाएगा इंटरव्यू तक? सौरभ भैया। Which SQL command is used to remove a specific row from a table? Truncate. Graph is used for table. Delete is used for. मुझे ये भी नहीं आता. Delete command is used for removing a row from the table. Okay. In cloud computing, what does scalability refers to? On-demand resource allocation. ये तो पता है मुझे. On-demand resource allocation. I am also trying, sir. But let's say किसका डे है कल? डी डे है कल. Which type of graph traversal uses a queue as its primary data structure? ट्रावर्सल बीएफएस. ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं. बीएफएस. Your answer is correct. Okay, what is the role of a foreign key in relational database? To uniquely identify rows in a table. No, establish a relationship between two tables. That is the. Okay, Roshan bhai, see you tomorrow. All the best for your assessment. I hope I could help in any way. So is the answer is correct. Which algorithm is used to find the shortest path in a graph with negative edge widths? Negative edge widths. भाई ये डीएसए करते टाइम तो कितना किया था बट now I forgot it. Dijkstra algorithm, Prim's algorithm. Dijkstra. Is it the correct answer? Is incorrect. Wellman Ford algorithm. इसलिए मुझे पढ़ लेना चाहिए था. क्या यार सीजीपीए भी नहीं बना. क्वेश्चंस भी नहीं बन रहा है. व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ज्यादा हो जाती है. एन स्क्वायर. एन क्यों हो गया? अच्छा तो नहीं तो एन लॉग एन तो नहीं होगी. एन लॉग एन तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है. In networking, which protocol operates at the transport layer and provides a reliable data transfer?
TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब तो गलत नहीं करना चाहिए मुझे, 3 बार पढ़ चुका हूँ सेम क्वेश्चन को। TCP right, correct answer. What is the minimum number of disk required for RAID 5 configuration? ये होता क्या है RAID 5 configuration? सौरभ भाई पता है क्या RAID 5 configuration क्या होता है? Hello Raj, what is up bro? Where are you from? What you do? एक तो गलत हुआ। TCP आंसर है। सौरभ भाई का एक आंसर गलत हो गया फाइनली। मेरा एक सही हो गया। What is the minimum number of disk required for RAID 5 configuration? अच्छा, you are saying कि I am wrong, like such. TCP ही है, operates at the transport layer and provides reliable data transfer। उसमें ये भी given है ना। Yes. I don't know you. You can introduce yourself, bro. Maybe I forgot. अरे राज XT। अरे सर आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। What is minimum number of disk required for RAID 5 configuration? मेरा हो गया भाई कॉग्निजेंट में। मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, तुक्का मारते हैं 3। RAID 5 के लिए 3 डिस्क रिक्वायर्ड होंगी। ये वो टावर ऑफ हनोई वाला प्रॉब्लम तो नहीं है? डिस्क। अब तो ये अटक गया। जेमिनाई। जेमिनाई गया। अरे नहीं गया। ओके 3 सही तुक्का था। ऐसे तुक्का लगाएंगे तो व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्शन? ये तो हंस रही है दुनिया। मेरी मौत हमें कानून कसरती है। ओके रिकर्जन तो पता है मुझे। इन IPv6 हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर एन एड्रेस? 64 बिट्स या 128 या 1 256? मुझे इतना पता है कि IPv4 से तो ज्यादा होते हैं, लेकिन कितने ज्यादा होते हैं ये नहीं पता मुझे। डबल या 4 टाइम्स? 128 पे जाता है। मैं हार गया। करेक्ट। ओके। मेरा मन कर रहा था कि मैं 64 करूं, बट कुछ तो याद था मुझे, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ ये गलती। 64 करने की गलती। सो IPv6 हैज 128 बिट्स। ओके। अरे हाँ यार, कितना सिंपल सा तो लॉजिक था, अभी मैं वही एड्रेसेस पढ़ रहा था। 128.2। अच्छा वो 256 तक की तरह था। Your answer C is correct. Okay, what is the primary purpose of cache in computer system? To increase storage capacity, to reduce the time required to access, to reduce the time required to access. ये तो पता है मुझे। It is a little basic kind of question.
कितने और क्वेश्चंस बाकी होंगे यार? व्हाट इज द पोस्टफिक्स नोटेशन ऑफ एक्सप्रेशन? ये तो मैं कर सकता। ए बी स्टार सी डी डिवाइड एंड माइनस। ए बी स्टार सी डी डिवाइड, डिवाइड वाला कहीं, डिवाइड एंड माइनस। अब तो सही होना चाहिए। Your answer is correct. In a relational database, what is the Cartesian product of two tables? और इसमें ऑप्शंस क्यों नहीं दिए? लेकिन उसको बोलेंगे क्या? मतलब all possible combination of rows from both tables. तो इसको क्या बोलेंगे? टेबल with all possible combination of rows from both tables. एक ही यही आंसर होगा, इसलिए कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ओके। ये जो किस तरह यूनियन। सेम टू यू सौरभ भैया। Which type of cloud model provides shared infrastructure for multiple organizations? Hmm, hybrid cloud, right? Shared infrastructure for multiple organization और कम्युनिटी होगा या हाइब्रिड होगा? कम्युनिटी कर लेते हैं। तो डी, कम्युनिटी क्लाउड। Okay, community is correct. What is primary difference between a queue and a stack? Queue में first in last, first in first out होता है queue में, first in first out, and stack में last in first out. So the answer is B. ये तो मैंने नया नया पढ़ा है अभी। Okay. Which of the following data structure is used in BFS? BFS में क्यों यूज होता है? Repeated question. It is a repeated question. What is the best case time complexity of insertion sort? Insertion sort. Best case time complexity. N. O of n. जब सारे एलिमेंट सॉर्टेड होंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n. Correct answer. Which data structure is most suitable for implementing an undo operation? Stack. ये तो आता है मुझे। डीएसए वाले क्वेश्चंस थोड़े बन जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। पार्ट सेटे, पार्ट से जी। Welcome to our live stream part. Okay, what is the maximum number of children a node can have in a binary tree? It itself says binary. That means two. अरे B ना, B. Yes. In SQL, which command is used to remove a table completely from a database? Drop table. Drop a table, right? अभी पढ़ा था मैंने। Correct answer. Drop table. Which of the following cloud services is responsible for delivering hardware? Which of the following? There are no options. Skip it. Skip it. Big O of n बोलना चाहते थे part. Okay, what is the time complexity of finding the largest element in a max heap? O of 1.
that is constant next की या फिर n होगा. Okay, my answer is correct. Which algorithm uses a divide and conquer approach in sorting, that is merge sort, right? Answer is C. Mhm. What is the role of data link layer in OSI model? Mm, Error detection and correction or routing? Data link layer. Error detection and correction भी होता है. See, okay, it is correct. In a database, which normal form removes partial dependency? 2NF. 2NF, that is option B. Okay, now I'm getting the right answers. Your answer B is correct. Let's move to the next. Which protocol is used for secure communication over internet, that is HTTPS? Finally, I'm getting right answers now by myself. What is the primary purpose of a DNS server? इसका फुल फॉर्म याद क्यों नहीं आ रहा? Domain name service. Hmm. Resolve domain name to IP address. It is the answer. मतलब बस फुल फॉर्म पता हो तो आंसर पता चल जाता है, राइट? डोमेन नेम सर्विस ऐसा कुछ फुल फॉर्म होता है इसका. दैट इज करेक्ट. What is the height of a complete binary tree with 31 nodes? Binary tree. 15 and 15. It was 3. It is 4. Answer is 4. That means option number C. हमने पढ़ा था कि 15 nodes वाली binary tree की height होती है 3. It should be 4, but the correct answer is 5. अब याद रखना पड़ेगा. Which algorithm is used for minimum spanning tree in graph? Prim's algorithm. Okay. What is the default port for HTTP? 80 or 8080? 80 or 8080? 80 or 8080? 80 is correct. Which database operation is used to extract specific rows based on a condition? Select, select, select. Okay, A is the correct option. What is the maximum number of edges on a simple directed graph with n vertices? Simple directed graph. N into n minus 1. Simple directed graph. पार्ट सेफ्टी सेइंग कल एग्जाम में ऐसे सेम क्वेश्चंस आएंगे भैया. तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? अगर तुम बता रहे हो तो थैंक यू सो मच यार. अगर सेम आएंगे तो मैं कुछ तो सीख जाऊंगा रात भर में. बट अगर ऐसे नहीं आएंगे, इससे भी डिफिकल्ट आएंगे, तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा. कल मैं लाइव स्ट्रीम कर भी पाऊंगा गेम. आई एम होपिंग कि यार कल का दिन अच्छा हो. अच्छा होगा. अच्छा होगा. मैनिफेस्टेशन वर्ड्स. इट्स गोना बी अ गुड डे. हैव यू गिवन द assessment already part? Sir, it's just been 2 hours. I'm feeling tired very much right now.
पार्थ आर यू देयर? बस चेक पर लिखकर गायब हो गए तुम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस? एन स्क्वायर तो नहीं है, एन इंटू एन माइनस वन हो सकता है, एन स्क्वायर माइनस एन, ये एन स्क्वायर माइनस एन भी नहीं हो सकता, एन इंटू एन माइनस। अच्छा, पार्थ सेट की सेम कल है, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये सेम क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे? तुम पूछ रहे थे। कुछ नहीं हुआ प्रक। सेम हेयर, काइंड ऑफ। आई एम आल्सो ट्राइंग, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ महीनों से, मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, सो आई एम इन द सेम बोट, राइट? बट नाउ आई हैव वन थिंग ओनली, जो मेरी वीकनेस थी अब वो मेरी स्ट्रेंथ है। आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, इवन आई एम नॉट राइट, बट आई विल ड्राइव माई लक with my confidence. Your answer B for what is the minimum number of edges in a simple directed graph with n vertices is correct. That is n into n minus 1. Simple directed graph has n into n minus 1 edges. Okay, directed graph होगा ना? Okay, this is the difference between directed and undirected graph. Which of the following is not a characteristics of a binary search tree? Left sub tree nodes are smaller than the root. Right subtree nodes are greater than the root. It allows duplicate nodes. This is not the characteristics. Option C. Okay, my answer is correct. In cloud computing model, which term refers to the ability to recover data after a failure? Fault tolerance is the correct answer. Which scheduling algorithm is non-preemptive? SJN. Shortest job next. My answer is correct. चलो कुछ तो आंसर सही होने लगे हैं मुझसे। In database, which command is used to grant permission to a user? Permit or grant? Grant or permit? दोनों नहीं हुए फिर enable। या मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स के कमांड भी नहीं पढ़े, बिना कुछ पढ़े मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि we will we will rock you। यहाँ भी कितना देना पड़ेगा? enable, enable is the right answer। Oh, grant is the correct answer, now I will remember। grant is the correct answer। What is the time complexity of searching for an element in a balanced binary search tree? Balanced binary search tree. Balanced binary search tree. That is A. Log n is the correct answer. Which protocol is used to convert IP address to MAC address? DHCP. That is, you are correct, Parth. I was wrong. I put N। ARP is the correct answer। यहाँ पे आके मैं गड़बड़ करने लगता हूँ। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? ARP फुल फॉर्म क्या होता है ARP का? मैं वही सीख गया। In SQL, which clause is used to filter records that meet a specified condition? E.
What is the minimum number of moves required to solve a tower of Hanoi problem with n disk 2 to the power n minus 1? ये n square क्यों कर दिया सब में? वैसे आंसर पता था मुझे. So the answer is B. यार अभी. Okay, good job, Parth. Your answers are delayed, but by 5 to 10 seconds. Which cloud service model provides a platform allowing customers to develop, run, and manage application? Develop, run, and manage application. Platform as a service. Okay, B is the correct answer. Which sorting algorithm is considered stable? Merge. That is B. It uses recursion. Okay, which networking device is used to connect multiple networks and forward packets between them? Multiple devices. Hub. I can make mistakes here, but I am confident that it is a hub because I use it. Correct answer is router. Hub is not the right answer. Networking में भी इतना कमजोर है ना. In a relational database, which keys uniquely identify a row in a table? Uniquely identify a key. Binary key. Guys, क्या sudo code करें अब? I think so many people are coming back. Sudo code करना चाहिए क्या? Your answer B is correct. I have some resources. I have shared the resources in the Discord server. You can join in there. Oh, your answer B for in relational database. Okay, correct. Okay, can you give feedback? How इसमें 225 प्रॉब्लम सारे पूछ डाले यार एक घंटे में. हाँ. अच्छा 49 क्वेश्चंस इतने 35 आंसर्स आउट ऑफ 49 क्वेश्चंस वर करेक्टली आंसर्ड. सिर्फ 49 क्वेश्चंस पूछे. बट लिस्ट तो मैंने 200 क्वेश्चंस की थी. अगर ये सही है तो इट्स गुड 35 आउट ऑफ 49. बट आई डोंट थिंक कि इसने सारे क्वेश्चन. लिस्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. क्विकली एक बार देख लेते हैं. Which of the following statement about min heap is true? Min heap is our root node has the smallest value. Okay. Which algorithm can be used to find the longest common subsequence of two string? DP. Which algorithm is used to find the longest common subsequence of two string? That is DP. जो कि नहीं आता मुझे. Which of the following data structure use LRU least recently used cache to replace the least recently used data? Hash map. Okay. What is the space complexity of a recursive function that calls itself with a constant number of parameters and does not use additional memory? O of n. Okay, which of the following is true about a circular W linked list? What is the purpose of Bloom filter? Which of the following type of data structure are implemented using a linked list, stack and queue?
ये तो पता है मुझे। Which of the following is the correct description for TCP three-way handshake process? ये मुझे नहीं पता। इसका सिंक सिंक एस वाई एन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसीपी का तो एक्नॉलेज होता है। What is the primary advantages of using try for storing strings? Allows for faster searching than hash table. Which of the following is property of a binary search tree? Right subtree contains node greater than the root node. Okay, what is the time complexity of finding an element in hash set? Is A. Hash set may we can find an element in constant time. Which of the following is true about red black tree? Red black tree नहीं पढ़ा मैंने. It is a type of avial tree. That is true. That is not true. It ensures that the tree is balanced and guarantees log of n time complexity for search operations. Okay, red black tree. In the context of cloud computing, which service model provides the infrastructure, including hardware, networking, and storage, that is platform as a service? इसका आंसर तो पास होना चाहिए था ना, आईएएस क्यों लिखा हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आईएएस क्या भी पढ़ा था यार ये? क्या था? लाइसेंसिंग एज अ सर्विस, वो कैसे हो सकता है? हार्डवेयर थोड़ा ही प्रोवाइड करता है वो। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगा ना हार्डवेयर। ये जेमिनाई, अच्छा जेमिनाई का नहीं, ये किसी और ने लिखा है आंसर। अच्छा ठीक है, इसको स्किप करते हैं। वैसे तो इसका आंसर पास ही होना चाहिए, एक बार पूछ लेते हैं जेमिनाई से। What should be the correct answer for this question? The correct answer is C. Why? इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आईएएफ लिखा हुआ है, मैं तो लास्ट पढ़ रहा था इसको। चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, ये भी एक तरह की सर्विस होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस हैज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओएन फॉर अ लिंक्ड लिस्ट? लिंक्ड लिस्ट ना, सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट, ये तो मुझे पता था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ हैश मैप? ये आई कैन डू। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, प्राइमरी पर्पस क्या होता है? कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, तो दैट टू वी नो इट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इवेंट ट्रू इज ट्रू? यहाँ तक के प्रॉब्लम्स आई थिंक वी हैव डन, वी हैव ऑलरेडी डन अराउंड 200 प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स मूव टू द सूडो कोड्स। सूडो कोड्स की फाइल मुझे कहाँ मिलेगी? डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिलेगी मेरे? The image is not spoken. स्पोकन कैसे करें आप?
तो क्या ये स्क्रीनशॉट रखा हूँ। So, let's check it. अभी क्या विजिबल है? Let's see. These are the resources I have और ये कोड बेसिस क्या है? आई होप कि वो स्लाइड पे हमारे चैनल पे what will be the output of the following pseudocode integer abc each c from 1 to 6 we can get an idea कि किस type के questions आते हैं pseudocode में. So if we have created three integers a b c, we have to set a is equals to 2, b equals to 5, c equals to 10. Then we will run a for loop each c from 3 to 6. 3 to 6. ठीक है. A is equals to a plus a. That means 3 times a. That means a is equals to 6. We need to print a plus b. It's easy. For each loop from 3 to 6, इसका आंसर 12 होना चाहिए क्या? इसका आंसर 12 होना चाहिए क्या? क्योंकि 4 में each c from 3 to 6 गिवन है, बट c की वैल्यू ऑलरेडी 10 है. तो 3 to 6 के लिए 4 लूप रन होगा कैसे? c is already 10. आंसर इज 1168. अब इसको सॉल्व करने बैठूंगा मैं. कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा इसको? फिर मैंने 2 बार सॉल्व कर दिया था.
going on the screen. What do you think? What type of question it is easy or difficult? Prasanna, bro, sorry, I missed your checks. You can join our Discord server if you are still in the live stream. There I provided all the resources. Yes, no cool speak अपना बाकी है. इसका आंसर 1168 कैसे होता है? करते जाते हैं. तब ना कर लिया हो तो can we do something about it? Hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सूडो कोड इंटीजर फंक्शन इंटीजर ए बी सी ये पैरामीटर्स हैं. इफ 5 प्लस ए 6 प्लस बी सी प्लस बी, मतलब 5 प्लस ए 6 प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस बी होता है तो इट विल प्रिंट 8. अब 8 एंड 12 का बिट मैनिपुलेशन करना पड़ेगा. पागल हो गए यार ये लोग. बिट वाइज एंड 8 क्या होता है बाइनरी में? 1 0 0 0. 12 क्या होता है? 10 10 10 11 11 0 0. तो इसका एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा? 1 0 1 1 1. तो वो कितना होगा? 11. सी इज इक्वल्स टू 11. एंड इफ, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ आया. सी इज इक्वल्स टू 11, देन it will end only if 3 plus b plus a is less than 5 plus a plus c. ठीक है, तो एंड हो जाएगा. Otherwise, A is equals to C plus B plus C. We need to return A plus B plus C. इतनी इक्वेशंस बनाने बैठूंगा क्या मैं? What will be the output of the following pseudocode for A is equals to 3, B is equals to 7, C equals to 7? Crazy यार. Oh, not anymore. I can't survive it on.
What will be the output of the following pseudocode? PQR, P is equals to 1, Q is equals to 6, R is equals to 4. If R and P and Q is less than P plus Q minus R, Q is equals to 4 plus R. ठीक है R and P and Q बिट वाइज ऑपरेटर है Gemini से पूछते हैं Hey Gemini, hey Gemini, can you help me learn how to solve these pseudocode problems in 1 minute? Unfortunately, there's no single trick to solving all pseudocode problems in just 1 minute. They vary a lot, but I can definitely help you get faster at understanding and solving them. Okay, To can you start, understand what- this pseudocode? okay, let's break down this pseudocode step by step. It looks like it's calculating a value A within a loop and then using that to calculate B before printing the result. We can trace the values of A and B through each iteration of the loop to find the final output. Want to work through it together? Yes. Just tell me what will be the answer. The answer is 1168. And how did you come up to that answer step by step? Can you tell me? Sure, the loop runs from C equals 3 to 6. In each loop, A is updated. First, it calculates 2 to the power of the current A, then adds A to that result. After the loop finishes, P is calculated as 9 plus 7 plus A. Finally, the code prints the sum of A and B, which equals 1168. I did not get it. Please elaborate. So let's walk through it. We start with R as loop. The loop runs 4 times. After the first loop, A becomes 6. Then after the second, it's 42. It jumps to 1764 after the third, and finally it's 3111612 after the last. P is calculated outside the loop, which gives us 16 plus the final A. Add A and P, and you get 3113240. How it ends up with 1168 as the answer? My bad, let me break it down for you. The loop goes from C equals 3 to 6. Gets updated each time. After the loop A is 1151. B is calculated as 9 plus 7 plus A, which is 1167. So A plus B equals 1168. Shut up. Enough is enough. Guys, this was it for today. मैं तो थक गया. Sudo code देख के भी I'm dead now. See you tomorrow. I hope you have your assessment really well. All the best, everyone who has watched the stream or will be watching the stream afterwards. Good night. All the best. Bye bye.